We are discussing increasing returns to scale. When all factors are increased in the same proportion or scale of production changes, the marginal product increases and total product increase at increasing rate. It is called increasing returns to scale. For example, if we increase all factors by 10% or 100% and total product increase by more than that, and total product increase by more than 10%, it is a case of increasing returns to scale. Here, we increase the scale of production, we change the scale of production, marginal product increases. And total product increase at increasing rate. So rate of change in total product is increasing. So here, Yes, sir. total product is calculated from marginal product. हम यहाँ total product को calculate कर रहे हैं from marginal product. Here, it is 5, it is 10 plus 5, it is 15, 15 plus 15, it is 30, it is 50, it is 75, Yes, sir. 105. सेम जो डायग्राम्स आपने अभी बनाई हैं वही डायग्राम्स आपको बनाने हैं. यस, Yes, sir. मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट करूंगा, एक ही डायग्राम में लगाऊंगा. ये ओ एक्स यहाँ तक है, फिर यहाँ ओ एक्स यहाँ तक है. यहाँ हम Yes, sir. scale of production on x axis for both diagrams, and OY here shows marginal product and here shows total product. यहाँ ये total product है. यहाँ आप कट भी कर सकते हो, ये एक डायग्राम है, ये दूसरी डायग्राम है. Yes, sir. तो marginal product अभी हमने दिखाया ना, this is marginal product line, so marginal product increase in case of increasing returns to scale. Yes, increasing returns to scale. And total product line is like this. This is total product line. It increasing, total product increases at increasing rate. At increasing rate. That is called increasing returns to scale, or S. Increasing returns to scale. Yes. Increasing returns to scale. ठीक है? Yes, sir. अब दूसरा मैं उठाऊंगा, distinguish between constant returns to a factor and constant returns to scale. होना चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गोवा, ये हो गया, आपने लिख लिया? Yes, yes, sir. लिख लीजिए, distinguish between constant returns to a factor and constant returns to scale. Yes, constant returns to a factor and constant returns to scale. First वाला आप underline कर दीजिए, constant returns to a factor. So returns to a factor, we already know it is short-run situation when some factors are increased and some remain constant, or some are changed and some remain constant. So constant means when marginal product remain constant. So yes, sir. इतना portion हमें बताता है when some factors are changed and some remain constant. What is it? It's returns. Constant returns means the marginal product remains same. So you must understand, I have already discussed that relationship between marginal product and total product. When marginal product remains same, the total product increase at constant rate. जब marginal product constant rate, when some factors are increased and some remain constant,
the marginal product remains constant. Yes, sir. Marginal product constant means fixed. ये change नहीं होता है, same रहता है. Yes, sir. Is to a factor is a situation, short-run situation, when some factors are increased and Yes, some sir. remain constant, some remain fixed. So some are fixed factors and some Constant. are variable factors. Yes, sir. So marginal productivity of variable Variable, factors yes, sir. remain constant. Returns means total product and marginal product. क्या हमारा production वहां से आ गया? That is returns. So you write down Yes, sir. when some factors are increased and some are fixed or some remain constant, some are fixed. When some factors are increased and some are fixed, the marginal productivity of variable inputs, that is those factors who are increased, the marginal productivity of variable inputs or variable factors remain same. Remain same. Same. That is the total Constant. product increase at constant rate. Remain. Marginal product of variable inputs remain same or remain constant. That is the total product increase at constant rate. The total product increase at constant Constant. rate. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So here we have variable inputs. This is marginal product and we have total product. Here we have also fixed inputs जो हमने आपको ये मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, otherwise ये जरूरत नहीं है यहाँ लिखने की. Fixed inputs means Yes, they sir. are same. We have a machine or a plot of land that is same. Constant. उसमें हम change नहीं करते हैं. What we change variable inputs जो हम vary कर सकते हैं. For example, labor है हमारे पास, raw material है, कभी capital भी हम change कर सकते हैं या कभी capital नहीं भी कर सकते, अगर heavy machinery है नहीं कर सकते हैं. So variable inputs like 1, 2, 3, 4, 5, 6. So marginal product, for example, remains the same. It is 5, Same. 5, 5, 5, 5, and 5. It remains same. So this is the case of constant returns to a factor. So इसमें से आप calculate कर दीजिए total product. शाबाश अथर. 5. पहला 5 है total product. फिर क्या है? 25. 10, 15, 20, 25. 10, 5 plus 5, And 10, 10 plus 5, 15, 15 plus 5, 20, 20 plus 5, 20, 25 25, plus 5, 30. it is 30. So this is total product. So total product Yes, sir. also increase, but at constant rate. Constant rate means same rate. अगर यहाँ 5 ऐड हो गया, यहाँ भी 5 ही ऐड हो गया, यहाँ भी 5 ही ऐड हो गया, यहाँ भी 5 ही ऐड हो गए. So rate of change is same. Rate of change in total product is same. This is the case of constant returns. अगर आपको डायग्राम बनाना है, Yes, sir. यहाँ हमारा टोटल प्रोडक्ट है, यहाँ हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, इस एक्सिस पे वो y वो x, यहाँ वेरिएबल इनपुट्स है, वेरिएबल इनपुट्स. यस, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट सेम है तो ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ऐसे सेम है ना. Yes, sir. Yes, inputs increase, but marginal product is same. This is marginal product line. This is same. This is same. Same. Yes. अब total product line किस तरह बनाएंगे अगर marginal product same है? It will be like this. Straight line. Yes, sir. Upward sloping straight line. Total product. Upward sloping straight line. इसमें करू शुरू नहीं है, ये straight line है, linear curve with power 1. Yes, sir. तो हम कहते हैं total product increase at increasing rate.
increasing rate. It is constant returns to a factor. Returns to a factor. Constant returns to a factor. Constant returns to a factor. Constant returns to a factor. Factor. अब constant returns to scale उठाइए. अब constant returns to scale. Scale. ये लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir. निकला हुआ. लिखिए अब ये constant returns to scale underline करेंगे हम. Constant returns to scale. यहां scale में होता है returns to scale means when all factors are increased or changed in the same proportion. What is the change in marginal product and total product? When Product. all factors are changed in the same proportion or by the same quantity, in the same proportion. In the same proportion, proportion, that is scale of production changes Constant. when all factors are changed in the same proportion or scale of production changes, the marginal productivity increases. Oh, sorry, marginal productivity remains same. Remains Yes, sir. same. It is Same. called a constant returns to scale. Constant return. For example, if all factors are increased by 10% and total product increase by same 10%. अगर सिर्फ ऐसे हुए 10% है, total product ते हुए 10%. 10%. Yes, go constant return return to scale. Eh? Yes. Constant returns to scale. अच्छा, अब ऐसे ही एक आप बनाइए ये Table. ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन है. स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ all factors are variable, that is scale of production changes. We have marginal product and we have total product. For example, scale of production 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही बनाएंगे हम 5 5 5 5 5 and 5. यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है. So this is constant. Same यही मतलब सिचुएशन है. यहां हम खाली लिखेंगे स्केल ऑफ प्रोडक्शन. स्केल ऑफ प्रोडक्शन यहां लिखेंगे हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. हाँ, यहाँ कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर नहीं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, बाकी सेम सिचुएशन है. अब नेक्स्ट वन है
Diminishing returns to scale. Decrease. अब है decreasing returns to a factor and decreasing returns to scale. ये हो गया. Yes, sir. नेक्स्ट लिख लीजिए distinguish between diminishing or decreasing returns to a factor and diminishing returns to scale. Diminishing returns to a factor and diminishing returns to scale. देखिए पहला वाला diminishing or decreasing returns Yes. to a factor. Here, when we have returns to a factor, in this case, we are repeatedly telling you that here some factors are changed and some remain constant. Some are variable factors and some are fixed factors. When some factors are changed and some remain constant, the marginal product of variable inputs decreases. यहाँ marginal product decrease होता है and total product increase, ये increase होता है at decreasing rate. The total product increase at diminishing rate or decreasing rate. It is called diminishing returns to a factor. Diminishing returns to a factor. So here we have variable inputs, we have marginal product, and we have total product. Marginal product and total product. For example, variable inputs are each factor you must change. For example, as a labor you change. Labor, 2 labor, 3 4 5 6. Godnuk labor, for example, marginal product 10 hawa, 2 log havne 9, 3 log havne 8, 7, 6, 5. So this is the case of diminishing returns. As a marginal product decrease gas. The total product kya. What happens to the total product? You get increase. You get it? Yes, sir. You get decrease. You have confusion. The marginal product go decrease, total product gets decrease. No, total product increases, but at decreasing rate. Yes, sir. ठीक है. Godness खसा total product is da. Pats खसा 9, pats खसा 8, pats खसा 7, pats खसा 6, pats खसा 5. So this is total product increases, but at diminishing rate. 10, 19, 27, 34. This is how to calculate total product from marginal product. 40, 45. ठीक है. बनाइए ये diagram. What is the diagram for diminishing returns?
From this to this, we have variable input along y-axis, and we have here also variable input y-axis. OY shows total product, and here OY shows marginal product. Yeli inputs increase chikara, total product decrease gasan. But there is opposite relationship between marginal product and factory inputs, like demand kuru. We have a kuru like this, like demand kuru. So Yes, for sir. diminishing returners, we have downward sloping curve for marginal product. As marginal product is downward sloping. After one is go diminishing returners to a factor. ये diminishing returners आयस उन्हें सो ये किस आयस थे ये हमें देखना है total product करूँ किस आयस total product करूँ आयस इस आयस increase का सम but at diminishing rate for in this way. Yes, sir. Soft ones बनाओ ये that's right. Yeah, I see concave to y-axis, convex to y-axis and concave to x-axis. Yes, sir. Total product. Yeah, I see diminishing returners to a factor. Here, total product increase at decreasing rate. Decreasing rate. Total product increase at decreasing rate. Okay. Yes, sir. अब हमारा एक रह गया diminishing returns to scale. वो भी same है, but there is difference of one thing, that is all factors are changed in the same proportion. यहाँ some factors constant and some are changed. ये हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ये मिटा हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये मिटा हुआ? Yes, sir. What should trauma? Think why? Sarish thaka will. Sir, Sarish in them for leave. गया से? Yes, sir. So good. Diminishing returners to scale. Returners to scale. Basically, अगर दुनिया mass promotion का साथ 12th session का सीन ही क्या? 12th session mass promotion का साथ तो ऐसे पढ़ूं साबा. लिखिए इसको. When all factor inputs are changed or increased in the same proportion, that is scale of production changes. Sir, when all inputs, all factors input are. All factor inputs are changed or increased in the same proportion, that is scale of production changes, the marginal product of factory inputs diminishes or decreases, and total product increase at diminishing rate. It is called diminishing returners to scale. For example, if all inputs are increased by 10%,
and total product increase by less than 10%. हम ऐसे लिखेंगे scale of production. We have marginal product and we have total product. Scale of production changes, increase from 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी मैंने आपको दे दिया 10, 9, 8, 7, 6, 5. Go marginal production decrease gasa, total production increase gasa at diminishing rate. Total show sato, soitru, sadji, this is how to calculate total product from marginal product. So total product increase but at diminishing rate. First there was 10 units increase, then total product increase by 9 units, then increase by 8 units, then increase by 7 units, then increase by 6 units, then increase by 5 units. So as scale of production increases, as all inputs are increased by a given quantity, the total product increase by less than that, or marginal product decreases. As we increase the quantity of inputs, the marginal product decreases. तो जिस तरह अभी हमने डायग्राम बनाई, वही सेम डायग्राम, यहां से हम टोटल प्रोडक्ट बनाएंगे. This is scale of production on x-axis for both the diagrams, OX, OY. Along this axis we measure marginal product. अगर ये decrease होता है, scale of production increases, it decreases. तो line इस तरह बनेगी. This is marginal productivity line. अभी जिस तरह हमने बनाई है, ठीक है? Yes, sir. ये इस तरह, Yes, sir. ये इस तरह होगी total product line. This is total product line. So this is diminishing returns to scale. Diminishing returns to scale. So here total product increase at diminishing rate. Diminishing rate. So this is the difference between diminishing returns to a factor and diminishing returns to scale. Scale. Yes. Yes, sir. In addition to it, अगर और एक केस भी हो सकता है, that is negative returns. ये तो diminishing था, negative returns. अगर negative Yes, sir. returns हैं, Yes, sir. वो मैं टेबल और डायग्राम ही दे दूंगा. Negative returns in both the cases. हैं? ये उठाया, ये हो गया, Yes, sir. सबने उठाया. अब मैं थोड़ा क्लू दे दूंगा आपको नेगेटिव रिटर्न्स के बारे में. थोड़ा टाइम है अभी. नेगेटिव रिटर्न्स ये उठाया आपने, ठीक ठीक हैं? Yes, sir. Yes. नेगेटिव रिटर्न्स क्या होता है? नेगेटिव रिटर्न्स होता है when inputs are increased but marginal product is negative. Marginal product is negative. हम यहां इसमें दे दूंगा मैं नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर. नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर. इसमें मैं दे दूंगा नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल. नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल. 10 मिनट है अभी. इस साइड में मैं दे दूंगा ये होता है when some inputs are changed and
some remain constant. The marginal product of variable inputs is negative. Inputs is negative, and total product decreases. Total product इस केस में टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है. Yes, in this case the total product decreases. So it is called negative returns. Negative returns. हम कहते हैं negative returns. अगर ये केस है, for example, variable inputs and we have marginal product and we have total product. अगर ऐसा है 1 2 3 4 5 6 लेबर हम इंक्रीज करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज, ये माइनस हो जाता है. ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये होता है -2 -3 -4 -5 -6 -7. तो इस केस को हम कहते हैं दिस इज नेगेटिव रिटर्न्स. यहां पर भी क्या होता है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल -2 5 -5 -9 so -14 -20 -27. जिस तरह आज हमारी इकोनॉमी को हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी को हो रहा है, ये माइनस में चली गई है. आज -7 पॉइंट कुछ है ग्रोथ रेट. यस सर. इसी तरह अगर नेगेटिव रिटर्न्स व्हेन ऑल फैक्टर इनपुट्स, अगर हम सारे फैक्टर इनपुट्स इंक्रीज करेंगे बाय सेम प्रपोर्शन, इनपुट्स और इंक्रीज्ड बाय सेम प्रपोर्शन. वैसे यह नहीं होता है, लॉन्ग रन में नहीं होता है ये सेम प्रपोर्शन, बट इट इज ए कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट है सेम प्रपोर्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव and total product decreases. So here we have scale of production, we have marginal product, and we have total product. Same situation 1 2 3 4 5 6. अगर ऐसी सिचुएशन है तो पहले ये -2 था, -3 -4 -5 -6 -7, ये नेगेटिव में चला गया. -2 -5 -9 -14 -20 -27. So this is the case of negative returns to scale, and this is the case of negative returns to a factor. Yes. अगर ऐसी सिचुएशन है तो मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट दोनों कैसी होगी? यस सर. ये शक्ल आपको देखनी चाहिए है, वैसे डायग्राम आपको याद रहनी चाहिए कि किस तरह की होनी चाहिए. यस सर. ये डायग्राम तो बिल्कुल सैंपल है. इसमें ये इस तरह की हो सकती है. ये OX है, ये मेजर करती है फॉर एग्जांपल वेरिएबल इनपुट्स. यहां ये -1 -2 -1 -2 -3 है, -4 -5. ठीक है ना? Yes. जब ये ऐसी करो होगी तो ऐसी सिचुएशन होगी, ये +1 है 1 2 3 4, तो यह मार्जिनल प्रोडक्ट सारा माइनस में चला जाता है. एज वी इंक्रीज, अगर 1 था तो 2 में था, ये इस तरह बनेगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लाइन. तो टोटल प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, मैं टोटल प्रोडक्टिविटी लाइन भी आपको दिखाऊंगा. आई विल शो यू द टोटल प्रोडक्टिविटी लाइन. ये टोटल प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है. तो टोटल प्रोडक्टिविटी लाइन
it will be above this. ये इस तरह है. As scale of production or variable Yes. inputs are increased, the total product decreases. Here, total product decreases as factor inputs increase. As factor inputs increase, or scale of production increase, or scale of production increase. Scale of production changes or increases. So this is the case of what? Total product, and this is the case of marginal product. In case of both, negative returns to scale and negative returns to a factor. This can be the shape of marginal productivity line, and this is the shape of total productivity line. So this is how to understand negative returns to a factor and negative returns to scale. Okay, हो गया ये है नेगेटिव Yes. रिटर्न्स. नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ है, ये नेगेटिव रिटर्न्स है. नेगेटिव रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर है या नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल है. द डायग्राम्स आर सेम. Same. ओके, हो गया ये. Yes, sir. Yes, sir. इस तरह हमारा प्रोडक्शन यूनिट खत्म. कल मैं उठाऊंगा कॉस्ट्स. बी रेडी फॉर द कॉस्ट्स. Sir, that parno ama supply demands. सॉरी, मैंने तो सब कुछ पढ़ाया. सप्लाई का सारा कुछ पढ़ाया मैंने. मीनिंग ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, Yes, sir. increase and decrease in supply, सारा डिग्रीज ऑफ सप्लाई तो पढ़ाया सारा कुछ. आप लेट आ गए तो अब कोई बात Yes, नहीं. यूट्यूब चैनल मेरी देखना है. Yes, sir. सारे लेक्चर्स हैं उसमें, सारे के सारे लेक्चर्स हैं. जो भी यहाँ ऑनलाइन इस वक्त मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, आपके साथ ये रिकॉर्ड हो रहा है. Yes, sir. जो इस वक्त हम पढ़ते हैं ना, जो 1 घंटे से हम पढ़ रहे हैं, वो Yes. सारा रिकॉर्ड हो गया लैपटॉप में, और बाद में मैं आपको ग्रुप में भी डालूंगा. वो मैं कंटिन्यूअस Yes, sir. ग्रुप में डालता हूँ. मुझे पता नहीं आप देखते हो या नहीं देखते हो. वहां व्यूज कम Sir, आते हैं. Sir, este bicho do hai. इसी तरह यूट्यूब चैनल, अगर आप लिंक ओपन करोगे ना, वहां मेरी यूट्यूब चैनल आएगी. तो उसमें सारा Yes, sir. सप्लाई है, प्रोडक्शन है, जो भी लेक्चर आप देखना चाहते हो, तो जो भी नोट वहां से आप तैयार कर सकते हो. सब कुछ है उसमें. ठीक है. ओके, तो कल हम कॉस्ट उठाएंगे. कॉस्ट्स, ठीक है. ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आज के लिए काफी है.